Okay, when we talk about multiple, we use LCM, and whenever we talk about a factor, a small number, it means we will talk about HCM, right? Now we will discuss few things. Can you read the board? Can you see here? Yes. Yes. See, whenever we are talking about multiples, it means we are talking about something which is happening together, right? Multiple thing is telling us that something is happening together. Like, for example, I write here all of you. Suppose I write here 5 and 4. 5 into 1 is equal to 5. 5 into 2 is equal to 10. So out of this, when we talk about 5 and 10, it means we are talking about multiple. Multiple is telling us Yes. product of some numbers, and factor is telling us something which is multiplied together. Small numbers, when they are multiplied together, they make a bigger number. So number is called multiple and smaller numbers are called factors. For example, 5, 1, 2. These smaller numbers are called factors. Okay, you should keep in mind whenever we talk about small thing, we will be thinking about factor, and whenever we talk about multiple thing, a big thing जो कि किसी को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा बनाया गया है, that is called multiple. That is fine. So here it is written LCM based on scenarios. Scenarios means कि कैसी कैसी conditions में आप LCM use करोगे. Raise your hand, all of you. You know how to find LCM by prime factorization or otherwise? Yes, you know it. Hands down. Very good. Did you know how to find HCM by prime factorization? That also you know. Very good. Hands down. Now, problem comes when there are story sums. Okay, जब वहां पे statement questions होते हैं and it is asked to you कि how you have to find LCM or HCF, then it is a difficulty for you to check. अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है कि find the HCF, you will find it. If it is told find LCM, you will be finding it. No problem. You can do the full question, you can find correct answer. But problem is when we are talking about statement thing, statement may we have to guess ourselves, we have to visualize the situation. According to that, we will be guessing कि हमें HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है. Okay, today we'll be discussing more on statements. इस statement को पढ़ के how we will be guessing हमें LCM निकालना है या फिर HCF निकालना है. Okay, so first of all, I must tell you कि कौन कौन सी condition में आप LCM निकालते हैं. Here it is written when things happen together again. कोई भी चीजें हैं. Suppose कोई bell ring हो रही है. Okay, one bell rings in 10 seconds gap. Other bell rings in 15-second gap. We want to know कि when these two bells will be ringing together. It means कि दोनों चीजें happening हो रही हैं अलग-अलग time पे, but they will happen together at what time? Together, multiple things. We are talking about multiple things. So we will be finding LCM. Okay, please write down little more points about LCM की कौन-कौन सी conditions में आप LCM निकालते हो. You should be knowing the basic things. Okay, write down here for LCM, write down small things. They are smallest जब आपको निकालना हो या फिर मिनिमम, किसी भी चीज में आपको मिनिमम चीज निकालनी है, स्मॉलेस्ट चीज निकालनी है. For those you will be writing finding LCM. ठीक है, it should be common होनी चाहिए and together होनी चाहिए. It should be together. Together, everything together. 4 children are walking together. What is happening? The same thing again. Maybe their distance, maybe their steps we are talking about. ठीक है, उन चारों बच्चों की इकट्ठी का वो डिस्टेंस कवर करेंगे. That we find from their togetherness simultaneously. Same thing you can write down here, simultaneous. ये words जो है आपको guess करेंगे कि आपको LCM निकालना है या फिर HCF निकालना है. Simultaneous means इकट्ठी चीज हो रही है.
right? So these words are the clue. They will give you clue in the question कि हमें LCM निकालना है या नहीं. Are you writing these key points? Yes, sir. Very good. LCM ऊपर हेडिंग दो और नीचे उसके पॉइंट्स लिखो कि कब कब कौन कौन से पॉइंट पे हम जो है वो LCM निकालेंगे. Similarly, we'll be talking about HCF. Can you hear me, Betty? All of you? Yes. Very good. Let us talk about HCF now. Highest common factor. Right? फैक्टर का काम क्या है? फैक्टर का काम है किसी चीज को डिवाइड करना. कभी अभी आपने बताया कि 1 जो है वो 5 को डिवाइड करेगा, फिर 2 जो है वो 5 10 को डिवाइड करेगा. तो फैक्टर ने क्या करना है? उसका काम क्या है? टू डिवाइड अ बिगर थिंग. आपके पास बहुत सारी बुक्स है, मान लो आपके पास 400 बुक्स है. You have to divide those 400 books among the children. किसी क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी डिफरेंट गर्ल्स एंड बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली. तो क्या करोगे? फैक्टर निकालोगे. राइट? तो आपको कैसे गेस होगा? डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज में कैसे गेस होगा कि वेदर यू हैव टू फाइंड द HCF और LCM. Write the key points for HCF also. I'm writing below. You need not write the full sentence, but write down the key points only. Okay? So what are the key points? That is sharing. शेयरिंग कैसे कि कोई भी चीज है आपने शेयर करनी है. आपके पास चॉकलेट्स है, टॉफीज है इन अ पैकेट. यू हैव टू शेयर अमंग योर क्लासमेट्स. राइट? इक्वली डिवाइड करोगे. इक्वली डिवाइड करना है. दैट विल ऑल्सो टेल यू कि कोई भी चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं. आई हैव अ फुल पैकेट ऑफ बैलून्स. आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग माय फ्रेंड्स. और आई हैव टू डेकोरेट इन डिफरेंट डिफरेंट रूम्स. तो मैं क्या करूंगी? मैं सारे के सारे अपने बैलून्स को अलग अलग रूम्स में थोड़ी 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 करके इक्वली करके आई विल डिस्ट्रीब्यूट, आई विल डेकोरेट. इट मींस आई एम फाइंडिंग HCF ऑफ the number of balloons I have. Right? Then we are finding greatest number. Greatest number. हमें greatest number चाहिए. Take care. सबसे बड़ा नंबर जो कि हमें इनको इक्वली डिवाइड करेगा. ग्रेटेस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर एक ही बात है. यू नो इट मैक्सिमम इट टेल्स यू ग्रेटेस्ट ओनली. राइट? सो दीज आर द की वर्ड्स which will be giving you a clue that we are going to find HCF. Right, beta? And one thing more, you can write here divide. Divide लिखा हुआ है यहाँ पे. You can write this divide equally. मैंने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे इक्वली डिवाइड या फिर डिवाइड. एक ही बात है. You must know. In such cases, we find HCF. Okay? Please raise your hand once you write these all key points and keep them. Yeah, wonderful. Very good, beta. We're going to discuss now few steps over here. You can see below. You can see I have an example. You have 96 tennis balls and 144 cricket balls. Okay. You have 96. Imagine करो. Come to the real life. Start visualizing. Imagine करो कि आपके पास 96 tennis balls हैं and 144 आपके पास cricket balls हैं. How many identical kits? Identical mean एक जैसे kits. आपकी छोटे छोटे बैग जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली सबको देने. तो आपने किट्स बनानी है. You make with no leftover. तो किट में क्या करोगे? कुछ टेनिस होंगी, कुछ क्रिकेट डालोगे, कुछ टेनिस के डालोगे, कुछ क्रिकेट के डालोगे. तो आप क्या कर रहे हो इसमें? HCF निकाल रहे हो या फिर LCM निकाल रहे हो? Tell me, are you finding HCF? Raise your hand who say yes, HCF. Okay, I'm repeating again. Repeating again. I know ये थोड़ी सी चीजें कंफ्यूज करती हैं.
I will tell you again. Okay. Once more, listen to me carefully. You have written these all keywords. अब ऐसा नहीं है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसको कीवर्ड्स में ढूंढना शुरू कर दो कि क्या है वो अभी क्या करें एलसीएम करें कि अच्छे करें. इमीडिएट आपके माइंड में क्या चीज आ रही है कि मेरे पास एक बिगर बैग है. In my bag, I have so many things, collection of things. I have to distribute those equally among some persons. माइंड में पहले ये सोचो कि डू आई हैव अ बिगर थिंग कि 96 टेनिस बॉल्स हैं और 144 क्रिकेट बॉल्स हैं. उनसे मैंने किट्स बनानी है और मैंने आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यू आर फाइंडिंग स्मॉलर. आर यू पुटिंग स्मॉलर थिंग इन किट या फिर इससे भी ज्यादा किट में डालोगे? 144 से ज्यादा डालोगे किट में या कम डालोगे? Then you are finding what? HCF? Raise your hand, beta. Who agree कि yes, HCF? Yes, very good. Very good. Yeah. We have a bigger thing, bigger collection of things. We have to make kits to distribute it equally among somebody. So we have to find HCF. Right? Let's do further. Now, next is read the statement carefully, beta. Okay, two TV ads are shown every 12 and 20 minutes. TV ads हैं वो every 12 minutes के बाद भी दिखाते हैं और every 20 minutes के बाद भी दिखाते हैं. After how long will both ads play at the same time again? Same time again. Something is happening together again. Simultaneously together. So what it gives you? LCM or HCF? LCM. Something is happening again. Simultaneous means together इकट्ठी exist करेंगी. One ad is happening for 20 minutes. After 20 minutes, one other ad is happening जो है वो 20 minutes के बाद है. तो दोबारा वो कब से डिस्प्ले होंगी? Together they will be shown after finding their LCM. Have you got the clue by this कि multiple निकालना है या फिर HCF निकालना है? You come to know? Guess मिल रहा है आपको? Yes. Very good. Let us talk about more. You want to make square boards from 81 centimeter and 108 centimeter wood. आपके पास wood का pieces, wood के pieces है 81 centimeter by 108 centimeter. What is the largest square tile size that can fit both? जो दोनों में fit हो सके. Think of it. You want to make square boards from. What do you mean by this? इसको इस sentence को ध्यान से पढ़ो बेटा. Read this very carefully. From का मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी एक बिगर बोर्ड है वुड का. बिगर बोर्ड मेरे पास ऑलरेडी है जिसका साइज मुझे दिया हुआ है. उससे मेरे को स्क्वायर टाइल्स छोटी छोटी बनानी है. ओके, प्लीज गेस इट. हु से एचसीएफ? रेज योर हैंड जिनके माइंड में आ रहा है कि एचसीएफ होगा. बिगर चीज मेरे पास ऑलरेडी है उससे मेरे को छोटी टाइल्स बनानी है. तो ऑफ कोर्स आई विल बी डूइंग एचसीएफ. Okay, good. Now you are confident. Okay. There are so many examples. You must clarify. इसमें कुछ note down नहीं करना. We will be doing questions also. Do you have module with you? Yes. Okay, we'll be doing questions from there also. Right? Okay, so I want the same. The car honks. Car A honks every 45 seconds and car B honks for every 75 seconds. After how many seconds will both honk together? Yeah. Please raise your hand who say LCM. जिसके माइंड में आ रहा है कि LCM होना चाहिए. Raise your hand please. Very good. Very good.
A fruit vendor has 84 apples and 126 grapes. A fruit vendor has, imagine करो कि उसके पास 84 apples हैं, 126 grapes हैं. What's the biggest number of fruit baskets he can make equally? small baskets बनानी है, right? पूरा जो उसके पास है उससे उसको small baskets बनानी है कि जिसमें equal number of distribution हो जाए. What it will be, बेटा? जिनको लगता है कि एचसीएफ होगा रेशियो एंड बेटा? Yes, wonderful. I think other section is waiting for you to sit here, is it? ठीक है बेटा, इसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना आप, नहीं तो नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग. ओके, जल्दी से आंसर. तो इसके मॉड्यूल में जो आंसर्स हैं, फर्स्ट का आपका एचसीएफ होगा. घर जाके आप इसको करना. आई एम क्विकली राइटिंग द आंसर्स ओवर हियर. फर्स्ट क्वेश्चन का आपका इट इज एचसीएफ. ठीक है, एंड प्लीज डू एट होम. घर पे जाके इसको करना जरा सारे. जस्ट यू हैव टू गेस कि आपको एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना. ओके, थर्ड वन इज एचसीएफ एंड एलसीएम. At home yourself. Okay? Let them set who are coming here now. They are waiting. Oh, what talking? चलिए वेट फॉर सम टाइम. बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं. ओके, चलो इनकी क्लास. Shall I continue for 5 minutes more? All right. Please write down the answers. Fourth is your LCM. You can see the statement and please revise at home and check it. Okay. Fifth one is HCF. You have come to know कि कौन सी स्टेटमेंट में हम HCF निकालते हैं, किस में हम LCM निकालते हैं. Fifth one is HCF. Then we want to realize when something will happen again. It is showing LCM. Right? Please write down these answers. Seventh one is your again LCM. Right? Means LCM. These are the answers for statement questions. After reading the statement, you can guess whether you have to find HCF or LCM. ठीक है बेटा, आपको इसमें फाइंड आउट नहीं करना है. जस्ट आपको स्टेटमेंट को विजुअलाइज करना है कि कैसे स्टेटमेंट है और मेरे को कैसे फॉलो करना है. ओके बेटा, तो यू नो इट कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. दैट यू नो ऑलरेडी. प्लीज रिवाइज एट होम. ओके, नेक्स्ट टाइम विल बी कंटिन्यूइंग अगेन. ओके, द चिल्ड्रन कम. थैंक यू. Why are you going down? Let them go first. Then you are out to set. Hurry up, beta, hurry up.
Very good. Wherever you find the space, please sit down. Open your notebook. We are doing topic. Okay, you know about multiple and factor. In lower classes, in fourth class, fifth class, you have read about कि multiple क्या होता है और factor क्या होता है. Have you read about that? Raise your hand. Have you heard this name? Multiple क्या होता है और factor क्या होता है? Okay, good. Hands down. Hands down. I am writing very small example over here. If 5 into 4 is equal to 20, then multiple will be 20. You know it already, right? And similarly, if 5 into 4 is equal to 20 here, then we 5 and 4 will be the factors. You know it already? You know it? And from here, you can guess very well that for talking about LCM, we think about bigger number, and for HCF, we talk about smaller number. छोटे नंबर्स पे जब हम मल्टीप्लाई करके एक बिगर नंबर लेके आते हैं तो उन छोटे टू नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, राइट? और जब हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है हमारे पास, व्हेन वी फाइंड अ बिगर नंबर, देन वी दैट बिगर नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल, राइट? यू नो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आल्सो आपको बताया गया है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है and LCM कैसे निकाला जाता है. You know it now, how to find HCF and LCM? You know it? All of you? Yes, you know it. Yes. Now problem is, in this class you are reading about the statements कि story sums है, so then you have to guess कि हम LCM निकालें या फिर HCF निकालें. In that there is a difficulty to think of. ठीक है? अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला गया है कि HCF निकालो, आप निकाल लोगे. अगर बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम, देन आल्सो यू फाइंड इट. बट अगर फ्रॉम द स्टेटमेंट, फ्रॉम द स्टोरी सम दे आस्क यू कि फाइंड द आंसर, यू डोंट नो कि वेदर वी हैव टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ. ठीक है? यू पॉज फॉर अ सेकेंड. आपको लगता है कि अरे अरे ये स्टोरी सम्स में अब समथिंग दे आर आस्किंग अबाउट द चॉकलेट्स, they are talking about number of students, they are talking about number of balloons. So what we will find, what कैसे निकालें, LCM निकालें या फिर HCF निकालें, that is the biggest problem, right? So today we will be discussing on statements, how to find LCM and how to find LCM, right? Suppose we have statements like that. First of all, please write down a few key points. Write down key points. कि कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, विच टेल्स यू कि अभी हमने एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है. मेक टू कॉलम्स, एलसीएम का डिफरेंट कॉलम बनाओ और एचसीएफ का डिफरेंट बनाओ. मेक अ लाइन इन बिटवीन, राइट डाउन द की पॉइंट्स. विच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द क्लू. ओके, so LCM, when we're talking about LCM, हमें बिगर नंबर निकालना है, राइट? ये जो बिगर नंबर है ये चीज निकालनी है. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि हमें मल्टीपल निकालना है. मल्टीपल मीन्स कि समथिंग विच इज हैपनिंग टुगेदर.
When we multiply two numbers, then we get the answer. You know, it means something is happening together. Then we get the multiple. So what is the key point here? It is togetherness. जिस भी स्टोरी सम में आपको टुगेदर वर्ड आएगा, then you will be guessing it कि they will happen together. It means we have to find LCM, right? Then it should be common. कॉमन एक ऐसा वर्ड है जो आपको क्लू देगा कि हमें एलसीएम निकालना है, या फिर साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस मीन्स व्हेन दे हैपन टुगेदर. ओके, इसके एग्जांपल्स अभी हम करेंगे. जस्ट ये क्लू पॉइंट्स, की पॉइंट्स अपने लिख लो विच आर गिविंग यू अ बिग क्लू. ओके, और क्या हम इसमें देखते हैं? स्मॉलेस्ट देखते हैं. वी लुक फॉर स्मॉलेस्ट या फिर मिनिमम, right? Something we are looking for minimum requirement or smallest number. These are the key points which will be telling you, right? Similarly for HCF, write down the key points. For HCF we look for कि 5 क्या कर रहा है यहाँ पे? 5 20 को डिवाइड कर रहा है. 4 is dividing 20, 5 is dividing 20, right? So what should be the clue in the story sum? It should be divide equally. Divide equally. स्टोरी सम में आपको गेस मिलेगा कि किसी भी चीज को हमने इक्वली डिवाइड करना है. मे बी यू हैव अ पैकेट ऑफ टॉफीज, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग योर फ्रेंड्स. तो आप उसमें एचसीएफ निकालोगे, राइट? देन शेयरिंग इक्वली. यू आर हैविंग समथिंग, पिज्जा खा रहे हो, यू हैव टू शेयर इक्वल अमाउंट अमंग योर फ्रेंड्स. ये नहीं कि किसी ने ज्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया. नो, right? And other thing is greatest number, greatest or maximum. You look for कि हमें सबसे बड़ा नंबर कितना चाहिए. अगर मेरे को सपोज मेरे को 15 टॉफीज सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो सारे सेक्शंस में, तो मेरे को कितनी ज्यादा चॉकलेट्स चाहिए. ओके, तो 15 जो मैं डिवाइड करूंगी तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? एचसीएफ, राइट? देन इट इज शेयरिंग, डिवाइडिंग, ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर. ये चीजें आपको क्लू देंगी कि हमें एचसीएफ निकालना है. Let us see the statements. Have you noted, all of you? These key points will help you out. Raise your hand once. Have you noted, beta? Very good. Let's see further. थोड़ी सी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका मॉड्यूल करेंगे. फर्स्ट इज एलसीएम बेस्ड सिनेरियोज व्हेन थिंग्स हैपन टुगेदर अगेन. अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चीजें जब इकट्ठी होंगी टुगेदर अगेन, उसके केस में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम. ठीक है, अब इसको सेंटेंसेस को आपने कॉपी डाउन नहीं करना, हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड एंड बी रेडी फॉर द असाइनमेंट टुडे. देन वी आर फाइंडिंग एचसीएफ. कि एचसीएफ बेस्ड सिनेरियो कैसा होता है? सिनेरियो मींस कि कैसी आपकी सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमें एचसीएफ निकालना है. हाउ मच कैन यू इक्वली डिवाइड? सेम थिंग, आई हैव सो मेनी बैलून्स विद मी. मेरे को उसको इक्वली डेकोरेट करना है सारे रूम्स में. ठीक है, तो वो इक्वली मेरे को देखना है कि कितने कितने हर एक रूम में मैं डेकोरेट करूं, सो दैट वो इक्वली डिवाइड हो जाए, इक्वली जो है वो डेकोरेशन सिमिलर हो जाए सब में. तो उसमें क्या देखेंगे? हाउ मच इक्वली डिवाइड मेरे को करने के लिए एचसीएफ निकालना. इज इट क्लियर? अभी कुछ लिखना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड विद मी. विल बी डूइंग क्वेश्चंस आफ्टर दिस. यू हैव 96 टेनिस बॉल्स. अपनी रियल लाइफ से उसको इमेजिन करो कि आपके पास ये चीज है, तो आप इसको क्या करने वाले हो. विजुअलाइज इट, राइट? इट इज 90. यू हैव 96 टेनिस बॉल्स एंड 144 क्रिकेट बॉल्स, राइट?
how many identical kits can you make with no leftover? कि आपके पास कुछ बचना नहीं चाहिए और इक्वली आपकी किट्स बन जानी चाहिए. किट का मतलब किट में क्या क्या होगा? टेनिस बॉल्स भी होंगी और क्रिकेट बॉल भी होगा. ओके. हेलो. 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 Yes, beta. Now we are discussing about. Yes, beta. Can you hear me? Look at the screen. You have 96 tennis balls and 144 cricket balls. How many identical kits can you make with no leftover? You understand kits? Kit के अंदर क्या होता है? कुछ टेनिस बॉल्स होंगी और कुछ क्रिकेट बॉल्स होंगी, right? So how will you find? How will you think of कि आपको LCM निकालना है या फिर HCF निकालना? Please put on video, बेटा. क्या आपको लगता है इसमें कि हमें HCF निकालना पड़ेगा? Yes. Yes. Wonderful. Because हमारे पास एक बिगर चीज है, हमारे पास बिगर अमाउंट में टेनिस बॉल्स हैं और क्रिकेट बॉल्स हैं, उनको हमने इक्वली डिवाइड करना है, तो इसका मतलब हम HCF निकालेंगे. राइट बेटा? Yes, you guessed very well. Next is 2 TV ads are shown every 12 and 20 minutes. Right? 2 TV ads हैं, आपको शो की जा रही है 12 मिनट्स में और 20 मिनट्स में. थोड़े थोड़े गैप में शो की जा रही है 12 मिनट्स और 20 मिनट्स. Put on video, बेटा. Are you listening to me? Yes. Yes. Okay, beta. Then how long will both ads play at the same time again? I'm underlining so that आपको keywords पता चले कि हम अभी क्या करने वाले हैं. कुछ 2 TV ads हैं. एक टीवी एड 12 मिनट्स के बाद होती है, एक 20 मिनट्स के बाद होती है. When they will happen together, simultaneous, together. कीवर्ड को देखो, इसके लिए क्या निकालते हो आप? LCM. You know it. Very good. We will be finding LCM because the ads will happen together. Once again. पहले तो हुई है वो 12 मिनट्स पे और 20 मिनट्स पे हुई है. Now again, after long time, after some time, they will happen together. It means they will be happening simultaneously, working together, right? So we are finding LCM. Next is you want to make square boards from 81 centimeter and 108 centimeter. I am underlining here square board from. I have a bigger piece of wood जिसका size आपको दिया हुआ है. What's the largest square tile size that fits both? Can you tell me? From the bigger size, we have to make small size square size tiles. क्या करने वाले हो आप? पूरे के पूरे बोर्ड साइज को आप छोटे छोटे पार्ट्स में काटने वाले हो. Is it? So what you will be finding? HCF या फिर LCM? What would you find? Can you hear me, बेटा? Yes. आपका वीडियो नहीं आ रहा है बेटा. I can't see you. Otherwise, you could raise your hands. I could see from your action. Okay, fine. Do you understand कि इसमें हम HCF निकालेंगे?
I'm reading once more. You want to make square boards. Square boards. आपको छोटे छोटे square boards बनाने हैं. From किसमें से बनाने? 81 centimeter, 108 centimeter wood. ठीक है, ये आपके पास wood का साइज है, बहुत बड़ा साइज है. इसमें से आपको छोटे छोटे स्क्वायर बोर्ड्स बनाने हैं. डू यू अंडरस्टैंड कि आपको इसमें एसटीएफ निकालना है? प्लीज रेज योर हैंड. यस, वेरी गुड. दैट्स राइट. फ्रॉम योर हैंड्स आई वांट यू टू नो कि आपको पता चल गया है. वी हैव टू फाइंड एचसीएफ. वेरी गुड बेटा, हैंड्स डाउन. थोड़ी सी और एग्जांपल करेंगे, बाद आई विल बी टेलिंग यू. Now we are going to start the module also, right? See the next. Three questions. Car A honks every 45 seconds. But जब आप क्वेश्चन करते हो ना, स्टेटमेंट क्वेश्चन, प्लीज मेक इट अ रूल कि आप उसको अंडरलाइन करो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको अंडरलाइन करो. A car A honks every 45 seconds and car B honks every 75 seconds. There are two cars A and B. एक का हॉर्न जो है 45 सेकंड के बाद बज रहा है, दूसरे का जो हॉर्न है वो 75 सेकंड के बाद. After how many seconds will both honk together? What is the clue? What clue you are getting? You are saying LCM. Raise your hand. Very good. From your smile, I can understand कि you know it. Very good. Keyword. Read the keyword. Very good. Hands down. आपको keyword में दिखाया गया था कि togetherness. When something is happening together again, it means you are going to find LCM. Right? Let us do these all to little faster. Next statement. Visualize karo. What is happening here? A fruit vendor has 84 apples and 126 grapes. What is the biggest number of fruit baskets? Biggest number of fruit baskets he can make equally. Yes, excellent. He has to make baskets which will hold equally all the fruit, both the fruits. It means you are finding HCF because he has to divide here. Divide. कुछ उसको हर एक में डालना है, equally divide करना है, and he has to distribute for to the customers. Right? Next one. Online classes repeat every 10 and 15 days. ठीक है? One class is happening after 10 days, other class is happening after 15 days. When will both be scheduled on the same day again? This is the keyword. The keyword आपको क्या बता रहा है? What clue you are getting? It means LCM. Very good, beta. You have understood very well, right? There are so many examples. Another story, another thing to visualize. Imagine karo, real life से उसको imagine karo. It is happening in front of you. Distribute 72 notebooks. Distribute 72 notebooks and 108 pencils among students equally. Key points after. Key points कौन-कौन से? कि distribute करने हैं और equally करने हैं. These are the keywords. Yes. Very good. अभी क्वेश्चन हमने पूरा नहीं पढ़ा है, but you have guessed it very well because the keywords are seen to you. Right? Juice machines A and B refill cups every 25 and 35 seconds. Right? When will they pour juice at the same time? Same time. Together. Simultaneously. LCM. Right? So you have understood?
Two scout groups go camping every 6 and 10 weeks. ठीक है, स्काउट कैंप कैंप के लिए जाते हैं आफ्टर एवरी 6 weeks or 10 weeks. After how many weeks will they go together again? Together again. This is the key word which is telling you you have to find and see. Is it clear to everybody? Yes. Very good. Keywords अपने सामने रखनी है and उनको बस learn करना है आपने and that will you will remember forever. Okay, after using again and again in the question, you will come to know that these are the keywords and what we have to find out. You have 64 centimeter and 80 centimeter long ribbons. Okay, ribbons are already with you. 64 centimeter and 80 centimeter long ribbons. What is the longest equal strips you can cut without waste? Cut. Yes. Cut is telling you what is the clue. You are getting here cut. But sir is there? No. Rohit sir is not there. Actually. Rohit sir is there?